Hi, here is another video on my channel. From today we are going to starting a series about the 9th class new course. We will do one exercise daily. So let's start from the chapter number 1. The name of the chapter number 1 is real numbers. So let's see what in this chapter. So I write the simple introduction of the first chapter, that is the real number. So what is the introduction of the real number? In the earlier classes, we learn about the different kinds of number like whole number, natural number, fraction in numbers, decimal in numbers, and integers. So the other question is what is the real number? रियल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर शो करा सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं. द नंबर विच कैन बी प्रेजेंट इन द नंबर लाइन दैट इज़ कॉल्ड द रियल नंबर. दे कैन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव. So the other question is what is a real number? The number which can be shown in number line is called the real number. ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे शो करवा सकते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं. दे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इंटीजर्स को हम रियल नंबर कह सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. Let's move on to the concept of rational and irrational number. What is rational number? It is very major and main concept in this chapter, the difference between the rational and irrational number. So let's see what is the rational number. The number which can be presented in fraction form like p by q and q is not equal to 0. ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन और p by q की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं. Now the main question is what is p by q? The p is represented here the numerator and q is represented the denominator, and the q is not equal to 0, and that means the denominator is not equals to 0. Now let's move on to the irrational number. What is the irrational number? The numbers which cannot be presented in fraction. ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करते उसे हम irrational नंबर कहते हैं. इसकी मेजर एग्जांपल जो है वो पाई है. इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी कहते हैं. Here is the question number 1 of the exercise 1.1. Identify the rational and irrational number. So the one question is 2.353535. This is the rational number because it is written in a decimal form. बेसिकली ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन था जिसको उन्होंने डेसिमल पॉइंट में चेंज कर दिया है. डेसिमल पॉइंट में कभी भी कोई क्वेश्चन जिसकी एक लिमिट हो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द अदर नंबर इज़ द इरेशनल नंबर. इट इज़ ऑल्सो रिटन इन डेसिमल फॉर्म बट it has not limit. The value after 7 is so on, so it is the irrational number. The other question is irrational number because square root 3 plus square root 13, when we take the square root of 3 it will come the value in points and the value is non-terminating, the value will be so on, and the square root 13 is also a so on value, so it is also a irrational number. I hope you understand this. If you understand this, then don't forget to share with your friends. In the other videos we will do about the other concept of the new course. Don't forget to subscribe the channel and like the video and share with your friends.